recommended warning labels. Thank you. सर, आदरणीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है जो लेबल को लेके है, जो फूड पैकेट्स पे आता है, तो मैं आदरणीय सदस्यों को यही कहना चाहूँगी आपके माध्यम से, सर ये रेगुलेशंस जो नोटिफाई किए हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जो कि कहता है कि ये रेगुलेशंस में दिया गया है कि ये लेबल पे जो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि कंट्रीब्यूट टू रिकमेंडेड डेली अलाउंस के आधार पर परसेंटेज के माध्यम से जो कि कंज्यूमर को एक विकल्प देने के लिए बने हैं, तो वो मैंडेटरी है और इसको सर फॉर फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को ये लेबल फूड पैकेज के लिए देने के लिए अभी शुरू होने वाला है. सेकंड सप्लीमेंट्री. So I have only one supplement. Thank you. माननीय संजय सिंह. सर मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सवाल है कि ऐसे कितने मामले आपके विभाग के द्वारा हल किए गए या कितने मामले आपके सामने आए जिन पर आपका हेल्थ डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है, कितने लोगों पे आपने अब तक कार्रवाई की, क्या इसका कोई डाटा है? क्योंकि FSSAI का लेबल लगा के बहुत सारे लोग सामान अपना बेचते हैं जो वास्तव में आपके मानकों को पूरा नहीं करता, बावजूद इसके अगर वो बेच रहे हैं तो उन पे कितनी कार्रवाई हुई? और एक छोटा सा सवाल हो गया संजय, इसी में दो सवाल आपने संजय जी पूछ लिया. प्लीज प्लीज. जी ज़रूर आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये सदस्यों को अवगत कराना चाहती हूँ कि ये सवाल बहुत ही गंभीर है जो कि एक फूड रिलेटेड जो अडल्ट्रेशन है उसके बारे में है और ये फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के एक्ट के तहत जो भी एक्शंस है वो लिए जाते हैं जो कि अपने मानकों पे खरे नहीं उतरते हैं, तो वहाँ पे सर स्टेट में हमारे स्टेट कमिश्नर रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फूड ऑफिसर्स रहते हैं जो कि ये देखते हैं और तुरंत उन पे कार्रवाई भी की जाती है. आदरणीय सदस्य ने जो सवाल किया है इसके डिटेल्स तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि लगातार इसमें 2019 20 21 में मुझे डिटेल्स है, लेकिन फिर भी उसमें नंबर ऑफ सैम्पल्स अगर एनालिसिस किए हैं तो लास्ट ईयर के मैं कहूँगी तो लगभग 1 लाख सैंपल को सर एनालिसिस भी किया है. उसमें जो भी है उनको कंप्लेंट के आधार पर, पिनल कोड के आधार पर उनको एक्शन भी लिया है और वो स्टेट के तहत किया जाता है. धन्यवाद. माननीय जया बच्चन जी. मैक्सिमम कंज्यूमर्स बच्चे होते हैं और बहुत से पैकेजेस जो हैं वो जेन्युइन नहीं होते हैं, लेबल नहीं होते हैं. क्या सरकार कोई अपने एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू या कोई ऐसे प्रक्रिया के थ्रू जनता को अवगत कराएगी कि आपको ऐसे ऐसे जगह में जाके कंप्लेन करना है और कितने दिनों में इस कंप्लेन के ऊपर कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि सर ये एक है मोनोसोडियम ग्लूटामेट. दिस इज फाउंड इन अ लॉट ऑफ द प्रोडक्ट्स विच इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन लाइफ. थैंक यू जय. आदरणीय उपसभापति महोदय, जो भी सवाल माननीय सदस्य ने किया है तो ये एक गंभीर मुद्दा भी है क्योंकि बच्चे लगातार कुछ खाते हैं तो उन्हें शायद पता नहीं है, ऐसे माननीय सदस्य का कहना है. लेकिन फिर भी सर हम यही कहते हैं कि जो भी रिकमेंडेशन के आधार पर जो भी स्टैंडर्ड को मेंटेन किए हुए हैं ये लेबल पे आना चाहिए, वो एक्ट के तहत मैंडेटरी है और अगर वो नहीं है तो उन पे एक्शन भी लिया जाता है. फिर भी अगर अवेयरनेस के बारे में कहा जाए तो लगातार ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है मिनिस्ट्री के थ्रू और हमारी फूड सेफ्टी को लेके, हाइजीन को लेके, हेल्दी डाइट को लेके, ट्रांस फैट को लेके ये अवेयरनेस किया जाता है. उसमें सर न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन की भी ये दी जाती है. फूड सेफ्टी के आधार पर जो भी इश्यूज है वो भी उस माध्यम से दिए जाते हैं. सर ऑनलाइन भी हम उस पर काम कर रहे हैं कि जो अवेयर करे. उसके अलावा फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, ईट टू राइट मूवमेंट चल रहा है, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि क्या खाना ज़रूरी है और जो उचित है, लेकिन जो कंप्लेंट आती है तो उसको भी हम सॉल्व करते हैं. माननीय महेश पोद्दार जी. Thank you, Vice Chairman Sahab. Sir, the government has replied that nutritional information requires display of nutrients but sir,
there are many harmful ingredients like fat, salt, sugar, preservatives. It is not mandatory to specify them, and the result is that the consumer doesn't know how much to consume and what is the safe limit and what is beyond the limit. Sir, I think the government wants to make the people aware. So will they review and take the comprehensive view so that a person by seeing the level can know if I am exceeding the limit? Thank you, Mahesh. सभापति महोदय, जो पहले ही मैंने कहा है कि जो भी उस कंटेंट में आता है, चाहे वो शुगर है, फैट है, सॉल्ट है, उसका विवरण उस पैकेट पे देना अनिवार्य है, जो कि हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड का जो नोटिफाइड रेगुलेशन है उसमें दिया है। लेकिन फिर भी अगर डेली अलाउंस में कितना खाना है और कितनी हमारी मार्किंग है न्यूट्रिशन की, तो उस माध्यम से ये भी मैंडेटरी किया है कि वो उस लेबल पे आए, ताकि एक विकल्प चुन सके कि इसमें क्या हानिकारक हो सकता है। धन्यवाद। Now question number 352, Honorable KRN Rajesh Kumar. माननीय मंत्री जी, जवाब सभा पटल पर रखा गया। सभापति महोदय। राजेश जी, put your first supplementary. Honorable Deputy Chairman sir, first I thank you, this August House member and the ministers, because today the question is reached the serial number 7. Thank to all. Thanks to all your colleagues. Okay. Please. Sir, whether Indian agriculture sector will face the impact arising of the hostilities between Russia and Ukraine, which are expected to push up the prices, availability of potash, a key component used in the manufacturing of the fertilizers. If so, what are the steps intended to be taken up the government? Thank you, Rajesh. पति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभागृह को और पूरा देश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पिछला साल भी भारत के किसान उर्वरक को लेकर के बड़ी चिंता थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में समय समय पर निर्णय लेकर के भारत के किसानों को उर्वरक समय पर और सही दाम पर हमने पूरा कर दिया है। और इस साल भी आने वाला रबी और खरीफ के लिए भी भारत सरकार माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उनका मार्गदर्शन में पूरा आश्वस्त कर रखा है, ऐसा कोई परेशानी नहीं होगा। और कीमत जो कीमत आज दे रहे हैं, बल्कि दुनिया में जिसका इनका फीड स्टॉक की कीमत 4 दुगना 5 दुगना बढ़ा है, लेकिन भारत सरकार प्रतिबद्ध है, जो कीमत है वही कीमत पर हम किसानों को पूरा करेंगे। Second supplement. Indian Farmer Fertilizers Cooperative Organization is the largest producer of fertilizers as of now. It was under the Ministry of C&F. It is a relevant ministry. Logically, IFCO should work under the C&F ministry for better execution. Why the ministry has decided to transfer this organization to the Ministry of Cooperation? Thank you. उपसभापति महोदय, ये कोऑपरेटिव सेक्टर ही है इफको, इसी के लिए वो सेक्टर में वो काम करती है। लेकिन भारत सरकार का दिशा निर्देशन के अंदर ही हमारा जो NBS के आधार पर जो हम प्रोड्यूसन करते हैं, वो हमारा नियम के तहत ही वो प्रोडक्शन करके हम किसानों को देते हैं। उपसभापति धन्यवाद। माननीय कामाख्या प्रसाद तासा जी। सर, मंत्री जी का आंसर देखा, मंत्री जी काफ़ी डिटेल से बताया है। मेरा क्वेश्चन है सर, आसाम में एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका यूनिट 1 और 2 बंद हो चुका है। 3 के लिए ऑनरेबल हम लोग का सरदार फाइनेंस मिनिस्टर ने 100 करोड़ का एक पैकेज दिया था, वो पैकेज का क्या हुआ? और 4th यूनिट जो है नहीं होने से 3rd यूनिट भी बंद हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में EI पूर्ति जो है ये फुलफिल करता है, ये एक ही फर्टिलाइजर कंपनी है। इसका यूनिट 2 और 3 बंद हो, 1, 2 बंद हुआ, 3 के लिए 100 करोड़ दिया, उसका क्या हुआ? 4 कप। धन्यवाद कामाख्या जी।
BVFCL का यूनिट को हम लोग नेशनल यूरिया पॉलिसी के अंतर्गत हमने 21 मई 2015 को हमने उनको परमिशन दिया है, ताकि इसके अंदर वो फिर से एक बार चालू करने के लिए, इतना हम बताते सकते हैं उपसभापति महोदय। माननीय त्रिचू शिवा जी, ऑनरेबल त्रिचू शिवा, your question is on this. A supplement. Yes, supplementary. Thank you, sir. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, the new NUP 2015, with the objective of maximizing indigenous urea production, promoting energy efficiency in urea production and rationalizing subsidy burden on the government. So my question to the minister is, while rationalizing a subsidy burden to the government, will it not be transferring it to on the shoulders of the farmers? Because already the farmers are suffering of not getting due and genuine price for the produce, but the input costs have increased. So when the subsidy has been reduced and shouldered on the burden on the shoulders of the farmers, will it not burden them? And do you consider of? Thank you. Have put your question yes, already. Will you consider of the problems that are faced by the farmers because of the hiking the prices of fertilizers? उपसभापति महोदय, नेशनल यूरिया पॉलिसी के अंतर्गत जो मैक्सिमाइजिंग इंडिजिनियस यूरिया प्रोडक्शन, प्रोमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी, ये मुद्दा लेकर के हम आए थे। इसी के अंतर्गत देश के अंदर 25 ऐसे गैस बेस्ड प्रोजेक्ट हमने उसको गैस बेस्ड पर कन्वर्ट करके उनको हमने चालू किया है। इसी का नतीजे से करीब 25 से आई विल कम बैक, लेट हिम प्लीज लिसन हिम, नो इशू। पिछला 14 साल से मतलब 2014 से के बाद अगर कंपेयर करें तो 20 से 25 लाख मेट्रिक टन हमने उत्पादन ज़्यादा किया है। तो सदस्य का क्वेश्चन है कि फीड स्टॉक का कीमत वगैरह बढ़ने के बावजूद ये ट्रांसफ़र जो रैशनलाइजेशन किसानों के ऊपर बोझ बढ़ेगा, किसी हालत में किसानों के ऊपर बोझ मोदी सरकार नहीं बढ़ने देता, क्योंकि BE 2021 और 22 के अंदर बढ़ने नहीं देगा। सुनिए इधर, 2021 और 22 का BE आप देख लीजिए, बजट के अंदर 83,548 करोड़ रखा था, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सभी फीड स्टॉक का कीमत बढ़ने के बावजूद भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व वाली सरकार, उसको सब्सिडी बढ़ाते हुए आरी के अंदर 1,62,072 करोड़ रुपए हमने बढ़ा दिया, लेकिन किसानों के ऊपर हमने बोझ नहीं बढ़ा दिया। और इसी के अलावा इस साल भी हमारा बजट के अंदर पिछले साल का बजट एस्टिमेट से भी ज़्यादा पैसा रख करके 1,09,242 करोड़ माननीय नरेंद्र मोदी सरकार, माननीय वित्त मंत्री जी ने दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले साल से भी हम लोग 25,654 करोड़ रुपए बजट के अंदर परियोजना ज़्यादा किया है, फिर भी इस साल अगर बढ़ने के बावजूद भी फिर आरी के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी के सरकार किसानों के ऊपर किसी हालत में बड़ा नहीं बढ़ने देगा, ये विश्वास देता हूँ। धन्यवाद। माननीय जयप्रकाश निषाद जी, प्लीज। माननीय जयप्रकाश निषाद जी। सबसे पहले तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि बहुत सारे उर्वरक कारखाने बंद हो गए थे, उन्होंने बना के किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया है। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में जो खाद कारखाना बन के तैयार है, क्या किसानों के लिए भरपूर मात्रा में उर्वरक समय से देने का काम करेंगे? गोरखपुर पिछला फरवरी के अंदर कमीशन हो चुका है, अभी उसका प्रोडक्शन चालू है। तो निश्चित रूप में हमारा NIP और NUP के तहत जो इतना प्लांट हमने खड़ा कर रखा है, इसी के लिए आत्मनिर्भर इस उर्वरक के अंदर देश बने, इसी का एक मुद्दा लेकर के कोया था। तो करीब आने वाले दिनों के अंदर 1,04,000 लाख मेट्रिक टन यूरिया देश के अंदर बनेगा और निश्चित रूप से किसानों को हमारा इंडिजिनियस प्रोडक्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 353, माननीय श्री GC चंद्रशेखर जी। This side, sir. माननीय श्री जी, प्लीज। Question number 353, sir.
माननीय मंत्री जी, सर उत्तर सभा पटल पर रख दिया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Sir, rural India doctor to patient ratio is around 1:10,926 as per National Health Profile 2019. In our state, Uttar Kannada district, if any emergency occurs in Sirsi Taluk, the patient has to go travel around 2.5 hours, 100 kilometers to Hubli or Shivamogga around माननीय 3.5 kilometers. जी, question hour is over now, please. Sir, this is the third time, sir, it is happening like. Now, we are taking this bill, the Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries Amendment Bill 2022. Srimati Nirmala Sitharaman to move a motion for consideration of the Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries Amendment Bill 2022. Sir, I rise to move that the bill further to amend the Chartered Accountants Act 1949, the Cost and Works Accountants Act 1959 and the Company Secretaries Act 1980 as passed by the Loksabha be taken into consideration. Honorable Minister, आप कुछ बोलना चाहेंगे? Sir, I'll do it to my reply. Thank you. Motion moved. There is one amendment by Sri John Britas for reference of the Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha. Member may move his amendment at this stage without any speech. Sri John Britas, Honorable John Britas, absent. So motion not moved. So now debate and Dr. L. You have 10 minutes, Hanumantayya ji. Yes, sir. Thank you, Deputy Chairman, sir. The Chartered Accountants, Cost and Works Accountants and the Company Secretaries Bill 2021 was introduced in the Lok Sabha on 17 December 2021. It was referred to Standing Committee on 21st December and passed in Lok Sabha on 30th March 22. Sir, this bill amends the Chartered Accountants Act 1949, Cost and Works Accountants Act 1959 and the Company Secretaries Act 1980 to change the disciplinary mechanism under the three professional bodies of CA, CS and cost accountants. Sir, this bill seeks to bring more scrutiny and autonomy in the functioning of these three professional institutes, namely the Institute of Chartered Accountants, Cost Accountants and Company Secretaries of India. Sir, the statement and objects and reasons of this bill states that amendments are as per recommendations of the High Power Committee created under the Ministry of Corporate Affairs, aimed at strengthening the existing mechanism of this functioning of three institutes. Sir, now the bill makes provisions for a non-chartered accountant as per the presiding officer of the disciplinary committee, which could hamper the professional functioning of the committee. Sir, the other professional bodies like medical council or the bar council are headed by professionals who understand the nuisances of industry and bring in experience and expertise. And how would a non-CA understand the technical nuisances of the issues in front of the committee? Is my first question. Sir, the second question is, external members still decided by same institutes. Sir, I just wanted to, Section 9A, very broad coordination committee is proposed under this bill. Sir, existing mechanism is taking care of the required coordination between the institutes. Under Section 17 of the CA Act, as a non-standing committee, the coordination committee of all the three institutes already exists. And I wanted to ask, what is the purpose of making this coordination committee? This may be made as standing committee. This is my suggestion. Sir, Section 21A
and 21B of this bill, 2 CAs, 3 non-chartered accountants or presiding officers will be 1 out of 3 non-CAs is made the provision. But the non-chartered accountants should not be the presiding officers of this disciplinary committee. The reason being, sir, it is because application of complex accounting, the functioning standards, auditing standards, code of ethics, taxation, GST, customs, money laundering, etc. required in case of professional misconduct by the CA, by the chartered accountant. So only the chartered accountant may fully appreciate these type of cases which are coming into this disciplinary committee. So I request the non-chartered accountants should not be the presiding officers of this disciplinary committee. That is my another request, sir. Sir, section 20C says any firm which has been declared from undertaking any activity or activities relating to the profession of a chartered accountant into the profession, the practice under any law, time being in force or any competent court. Sir, this section 20C, there may be a serious consequences if firms are removed. That is very, very important. So this provision should not be there, so that the one more problem in this is, these committees are, this department itself is self-funding department. Government is not spending even any amount on these 3 institutes. Their studying is independent, the students are being funded by their parents, and the committees are running under the fees collected by the students. When that is the case, the government's interference as much as possible should not be to the long way. It should be allowed, the autonomy of these bodies should be allowed, and the government also interested in allowing the autonomy of these bodies. But on the other hand, backside of the door, they wanted to enter and control all the institutes, which is not correct. Sir, as per the section 20A, register of firms has been made a separate chapter. Of course, that is okay and good, I agree with it. If the name of the firm is registered outside India, then identical or similar name should not be registered in India is the condition. Sir, how do you verify this? I wanted to know from the Honorable Finance Minister in this case, if the same name is registered outside India, many a times the Indian people who are wanted to register may not be able to get these names, so that if there is repetition, it will be disqualified. That should not be allowed, and I wanted that section has to be corrected properly. So verification of names registered outside India through one single window agency, which may lead to verification of name, may be very difficult. So we should not put people into trouble just by names. So that is what my request is. Sir, section 19(2) and 20B, in these two, in the register of members, firms inclusion of information pertaining to pendency of actionable cases. Sir, this entry of pendency of actionable complaint or information, the cases should be made only after the member or the firm held guilty by the board of director or disciplinary committee and the final order is passed. Sir, here there is a problem. During the process, if a firm or a person, his name is announced here, he will have the adverse effect. So unless the final order is passed, his name should not be published. That is another request by me. So I am requesting section 21(8)
as per the bill, non-withdrawal of the complaint filed with this disciplinary directorate under any circumstances is the condition. Sir, I just wanted to ask the Honorable Finance Minister again, if anybody files a submission or files to the disciplinary directorate, if they are not allowed to withdraw their own things after the correction by them, what is the problem for the disciplinary committee is my question. Why it should not be allowed to withdraw? Sir, can we be so strict that treating these firms, treating these persons as criminals under these acts? So I sincerely request the government allowing withdrawal of the complaint filed before them must be there. It should be there because the person who has filed any complaint, filed his own cases, can be allowed to withdraw, but the bill doesn't say so. That is very, very strict and it should not be there according to me. Sir, section 21(9) says availability of the status of actionable information. Availability of status of actionable information and complaints pending before the disciplinary directorate or the board of directorate or the disciplinary committee. These only after final order is made by the BOD, which I have already said. See, unless... Please wind up now. I will do it, sir. Unless the board of directorate or the disciplinary committee are made available in public domain, then the firm will have the adverse effect in the public domain. Afterwards, if the case is going to be in his favor, the firm may not get any business afterwards. He may not be able to practice at all. So that is the reason I request the Honorable Minister allow these only after the final decision is done by the Board of Director. So these are my submissions under this bill, sir. Thank you. After correcting this bill, this can be passed. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Sri Suresh Prabhu. So thank you, sir. And I know this is in a way a very important piece of legislation, bringing amendments to some of the very important institutions, professional bodies that function in the country. As we know, when we want to accelerate the rate of growth of Indian economy, it is obvious that a main important responsibility will be that of the corporate sector. Because as the Finance Minister said in a budget speech, as well as reiterated it on a number of other occasions, that we must boost private investment. Besides public investment, which is really now responsible for bringing in a very good, respectable rate of growth for the Indian economy, we must have a corresponding boost from the Indian private sector, which is actually called a corporate sector. There are, of course, non-corporate sector entities as well, but major burden lies on the corporate sector. And the corporate sector's functioning, therefore, becomes very important. How do you ensure that a corporate sector which collects monies from the secondary market, from the primary market, put it back as equity or even loans, they borrow from the banks